what is animal husbandry. It is a branch of agriculture which deals with the art of breeding, feeding, rearing, caring of the animals for the benefit of human society. So this is the definition of the animal husbandry. Okay, the image also shows that how the animals are rearing the cattle, and there are variety of the animals we domesticating since long. Okay, so this is the definition of the animal husbandry. It is what? It is a branch of agriculture. Okay, now for what purposes we use the word animal husbandry? मैंने कहा कि animal husbandry एक branch है. Animal husbandry जो word use किया जाता है applies mainly to the cattle or the dairy cows, where we rear, breeds and care the cattle or the dairy cows, as well as the buffaloes and the chickens, goats, pigs, horses and sheep. Apart from that, today even the animals like donkey and mules, rabbits and insects such as honeybees, silkworm, like insects, etc., also been raised by the human being for their own purposes. So all these comes under the animal husbandry. All these comes. अब ये सारे आ जाएंगे एनिमल हस्बेंड्री में. तो थोड़ा थोड़ा आपको सबके स्टेटस लर्न करने होंगे. ठीक है, इसीलिए इन सभी टॉपिक पे क्वेश्चन आते हैं. सेरिकल्चर पे भी, एपीकल्चर पे भी, लैग कल्चर के ऊपर भी. ठीक है ना, व्हाट इज द स्टेटस ऑफ एग प्रोडक्शन, उसके ऊपर भी, मीट प्रोडक्शन, वूल प्रोडक्शन. ठीक है, सभी के ऊपर क्वेश्चंस आ सकते हैं. तो आपको होलिस्टिकली थोड़ा थोड़ा पता होना चाहिए. ओके, नाउ लेट्स अंडरस्टैंड. In the modern time period, it also referred to, animal husbandry also referred to what? Animal agriculture. अभी तो एग्रीकल्चर ऑफ क्रॉप्स ही सुने थे. सीरियल्स क्रॉपिंग इज कम्स अंडर एग्रीकल्चर, बट एनिमल हस्बेंड्री इज ऑल्सो रेफर टू एनिमल एग्रीकल्चर. ओके, become central to economic development. It comes under allied sector, as you know, of the rural population. So for the development of the economy of the rural population, basically this animals are very important, and this rearing contributed in the economy, increase their income, and as their income increases, their social well-being also achieved, and the status also change. Okay, but this practices largely depend on the monsoon, because again, to feed the cattle you need fodder, and the development of the pasture land and the fodder depend on what? Depend on irrigation. And what is the source of irrigation in India? Basically, there is no penetration of irrigation all across India. So what are the major source of moisture? Is the monsoon rain. So basically what is the basic challenges is the agricultural activity in India is depend on the monsoon. और उसमें भी अब देखो क्या है कि मॉनसूनल रेन के बाद एग्रीकल्चरल एक्टिविटी होती है, खरीफ हो, रबी हो. तो खरीफ सीजन में द पीपल्स आर स्टिल वेटिंग फॉर द मॉनसून टू कम. मॉनसून डिले ड्यू टू साइक्लोन दिस ईयर, नो. अब वेट कर रहे हैं लोग कि वर्षा हो तो फिर खेत तैयार करें, फिर खेती करें. अब अगर डिले होगा तो खेती डिले होगी. ठीक है, अब ऐसे में एनिमल रियरिंग सपोर्ट करता है इकोनॉमी जनरेशन. जब आपका हार्वेस्टिंग डिले होगा तो ऐसे में इकोनॉमी, रूरल इकोनॉमी कैसे चलेगी? विद द हेल्प ऑफ cattle rearing, with the help of animal husbandry, with the help of poultry, with the help of piggery. इसकी मदद से इकोनॉमी चलती. तो मैंने क्या कहा कि बिकॉज द इंडियन एग्रीकल्चर डिपेंड ऑन मॉनसून, सो द रूरल इकोनॉमी
In the rural economy, the animal husbandry having parallelly very significant role, because the economy of the people also run by rearing and breeding of the cattles. वो दूध बेचकर अपना पैसा निकाल लेते हैं, वो अंडे बेचकर अपना पैसा निकाल लेते हैं. अगर एग्रीकल्चर टाइम पर नहीं हुआ, हार्वेस्टिंग नहीं हुई, तो कैसे उनकी जीविका चलेगी? उसमें एनिमल हस्बेंड्री का बहुत इंपॉर्टेंट और अहम रोल है. ओके और उसमें मैंने बताया क्यों, बिकॉज ऑफ अनसर्टेनिटी एंड वेगरीज ऑफ मॉनसून. सो दैट्स व्हाई व्हाट आई हैव सेड दैट हियर कि मॉनसून के कारण इंप्लॉयमेंट 180 मैन डेज है. ठीक है, आप पढ़ेंगे इंप्लॉयमेंट का यूनिट मैन डेज, सर इकोनॉमिक्स में पढ़ाएंगे. 180 मैन डेज, बाकी 365 दिन में बाकी इंसान क्या करेगा, कैसे अपनी जीविका अर्जित करेगा? भारत में जो मॉनसून होगा और खरीफ और रबी सीजन क्यूमुलेटिवली मिला लो तो एग्रीकल्चरल एक्टिविटी कितने दिन इंसान करता है? बोला 180 दिन 365 में. बाकी दिन वो क्या करेगा? बाकी दिन एम्प्लॉयमेंट, रूरल इकोनॉमी के लिए अहम रोल है एग्रीकल्चर का, पर एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेज 180 दिन. ठीक है, खेत तैयार किया, उसमें बीज डाल दिया, अब क्या करना है आपको? फसल पकने की तैयारी करनी है. बीच में क्या करना है? थोड़ी टिलिंग प्रैक्टिसेस, थोड़ा वीडिंग, वीडीसाइड्स डालते हो या वीड्स निकालते हो खुद से. और क्या करना है आपको? इरिगेशन मैनेज करना है, समय समय पे फर्टिलाइजर देना है. कितने दिन इन्वॉल्व रहोगे? 180 दिन. रेस्ट ऑफ द पीरियड क्या करेगा इंसान? रूरल इकोनॉमी कैसे चलेगा, लाइवलीहुड कैसे जनरेट होगा, उसमें किसका अहम रोल है? एनिमल हस्बेंड्री. देयर इज अ वेरी वाइटल रोल ऑफ द एनिमल हस्बेंड्री. सो हियर आई हैव मेंशन्ड दैट to why the man is dependent on the animal husbandry, because only 180 days man days the people employed and involved in agrarian activity. The rest of the time they are free to rear and cattle and raise their economy with the help of animal husbandry. Now that's why the government parallelly focus on the animal husbandry sector, because it is the engine or the driver of the rural economy in India. आप समझ गए इसका इंपॉर्टेंस क्या है? So the livestock sector has been renowned as a backbone of Indian agriculture. It is backbone. Apart from supply of the consumable milk, meat, egg as a source of protein, ever increasing Indian human population, animal not only been contributing to concrete the animal based industry by producing the hide, fiber, wool, bone meal, blood meal, but also to boosting Indian traditional art and craft by providing feathers, hooves and horns. Okay, so it having the contribution in art and craft also. आपने हैट देखा है जो फीदर लगे रहते? आपने ड्रेसेस देखे हैं? सेवरल ट्राइबल्स वियर्स द एनिमल्स प्रोडक्ट्स. ओके, सो इट इज intricately linked with our culture. Okay, now let's understand. Here what I have mentioned, that the animals were used for various purposes: milk, meat, fiber, as a drought energy for the plowing in the field. What is the drought energy? हम इसको खेत में हल जोतने के लिए, खेत तैयार करने के लिए यूज करते हैं, and for the manure also. Okay, so it improve the biological efficiency. Apart from that, what is the multi-purpose role? Land availability, labor cost, capital cost, market demand. क्या करता है? इट रिड्यूस द लेबर कॉस्ट. ये भी काम करते हैं. ठीक है, मैंने आपको बताया था राहट से पानी निकालते हैं तो क्या करते हैं? बैल को जूत दिया और बैल घूम रहा है, वो अपने आप घूम रहा है. देयर इज नो नीड ऑफ अ पर्सन. एक इंसान लगा होता तो. आप समझ रहे हो? सो द ड्राउट पावर, द बायोगैस वी कैन प्रिपेयर विद द हेल्प ऑफ काउ डंग, बफेलो डंग.
एंड द डंग किंग्स गोइठा कंडा जिसे कहते हैं, जिसपे आप खाना बनाते हैं इन रूरल एरिया, वेरियस पीपल okay utilized in the rural India have their own landmark by shaving considerable amount of fuel and electricity and thereby contributes in the pollution control up to some extent. Biogas is a what? It is a renewable source of energy. Biogas is a renewable source of energy. So the animal products are also the source of energy. Cow dung cake, biogas. Okay. Again, there is a vital role. Now, what are the challenges in the field of animal husbandry? क्या challenges है? There are so many. मैंने क्या कहा कि basically जो हमारे native breeds हैं, अगर देखोगे, the native animals or the breeds having the less milching ability, कम दूध देते हैं, एक ये बड़ा चैलेंज है. तो हमें और बेहतर ब्रीड्स डेवलप करने होंगे. अब जब ब्रीड आपको डेवलप करना होगा तो उसके लिए आपको R&D, रिसर्च एंड डेवलपमेंट इंस्टीट्यूशन डेवलप करने होंगे इंडिया में. वी हैड ऑलरेडी develop certain institution, but again there is a requirement, and to run this research and development institution we need a skilled person, okay, where we can do the hybridizations and selective breeding and we may develop the new breeds which can gives us more milk, more meat, more wool. Getting my point? So that needs investment, money. इसको डेवलप करने के लिए बहुत पैसे लगाने की जरूरत पड़ेगी, खर्च करने की जरूरत पड़ेगी. ऐसा नहीं एक दिन में आप रिसर्च सेंटर बना दें, लोग ले आए, ट्रेन कर दें और अगले दिन बनने लगेंगे ब्रीड्स हमारे यहाँ. ऐसा पॉसिबल नहीं है. दैट नीड ऑन ऑर्गेनाइज्ड इन्वेस्टमेंट इन दिस सेक्टर. दैट इज अनदर चैलेंज. ओके, so lack of skilled person, lack of research center, lack of the well breeds in India, lack of money to invest in this sector, these are various constraints in this field. Okay, apart from that, what is the another constraint? Devastation of natural pasture due to the climate change, due to population pressure. क्या हो रहा है? धीरे धीरे हम अपने पास्चर लैंड खोते जा रहे हैं, खत्म होते जा रहे हैं. चरागाह भारत से लगभग पुराने समय में देखते थे झुंड में जानवर जाते थे चरने के लिए. बड़े बड़े चरागाह होते थे, बड़े बड़े पास्चर लैंड होता था. सारे गांव के भेड़ बकरियों जानवरों को एक साथ कई चरवाहे लेकर जाते थे, चरागाह में छोड़ते थे, शाम को लेकर आते थे, है ना. बट वो प्रैक्टिसेस धीरे धीरे बंद हो गई. क्यों? नेचुरल पास्चर्स डिक्लाइन हो गए, खत्म हो गए. And they are shrinking with a very fast rate. So this is the challenge, where we feed the cattle and what we feed the cattle. So the feeding and the fodder is the greatest challenge. Apart from that, inferior quality of fodders in India. Basically क्या करता है रूरल इकोनॉमी में, क्या करते हैं लोग? जो हार्वेस्टिंग के बाद फसल के रेसिड्यू बचते हैं वो जानवरों को खिलाते हैं. ठीक है ना, गेहूं काट दिया, धान काट दिया, ठीक है ना, तो उसके रेसिड्यू जो बचे उसको खिलाते हैं, है ना. उसको खाने से कितना वो दूध देगा, कितना वो मीट क्रिएट करेगा. ठीक है, आप क्वालिटी फीड नहीं देते. इंडिया में एक प्रॉब्लम क्या है? देयर इज नो अवेलेबिलिटी ऑफ क्वालिटी फीड ऑल अक्रॉस द रूरल इकोनॉमी फॉर द पुअर पीपल. Another challenge is deforestations. Forest is again a source for the what? Feeds for the cattle. अब फॉरेस्ट खत्म करते जा रहे, तो उनके लिए फीडिंग की समस्या है. एवर इंक्रीजिंग कंपटीशन विद द ह्यूमन.
फूड, आप उसके खत्म करने के पीछे चारागाह, पास्चर लैंड या ये फॉरेस्ट का रीजन क्या है? पॉपुलेशन प्रेशर. वी आर कटिंग द ट्री, वी आर जस्ट engulfing the pasture land. Why? To create agricultural field or for the settlement. तो इंसानों को फीड करने के लिए आप पास्चर लैंड को एग्रीकल्चरल लैंड में बदल रहे हो, फॉरेस्ट लैंड को कट करके एग्रीकल्चरल लैंड में कन्वर्ट कर रहे हो, तो जानवरों का क्या होगा? व्हाट अबाउट दैट? अगेन दिस इज द प्रॉब्लम. ओके, so these are some basic problems related to this. Okay, now changing environment, changing customs, industrialization, urbanization, okay, mechanization and several other factors, this also lead to what? These are the biggest challenges. Customary practices बदल रहे हैं तो rearing भी change हो रही है. Okay, mechanization, animals के यूज को खत्म करते जा रहे हैं धीरे धीरे, बिकॉज एग्रीकल्चर में अब आप यूज कर रहे हो ट्रैक्टर, हार्वेस्टर्स, तो आप ड्राउट एनिमल्स को यूज नहीं कर रहे हो. यू आर नॉट यूजिंग द ड्राउट एनर्जी. व्हाट यू आर यूजिंग नाउ? द टेक्नोलॉजी, द मशीन्स, एंड दिस मशीन्स आर ग्रेजुअली रिप्लेसिंग द एनिमल्स फ्रॉम द रूरल इकोनॉमीज, एंड दैट इज अनदर challenges. So we have to create the balances. We cannot say that we can stop the use of machine, use of technology, but you have to understand how we can manage the population of the cattle or the population of other animals, how we can drive their uses. Okay, so these are certain challenges of this field. Now, by looking at that challenges, what the government has taken the steps to improve this sector, let's understand. I had mentioned that the livestock situation in India, though alarming, क्योंकि पास्चर लैंड कम हो रहे हैं, डिफॉरेस्टेशन हो रहा है, मैकेनाइजेशन हो रहा है, अर्बनाइजेशन बढ़ रहा है, लोगों की माइंडसेट बदल रही है. द रूरल पीपल माइग्रेटेड टू अर्बन एरिया, लीव द एग्रीकल्चरल एंड डोमेस्टिक प्रैक्टिसेस. Okay, so the behavioral pattern is also changing. So like that, animal husbandry sector facing such a problem. Okay, apart from that, lately been improving in the last few years. उसके बावजूद भी भारत ने काफी कुछ improvement दिखाया है animal husbandry sector में. वो कैसे संभव हो पाया improvement despite certain challenges? I had given the steps. Livestock population has been increasing owing to the access to improved veterinary technologies. पहले से अभी बेहतर हमारे पास वेटनरी फैसिलिटी है, अच्छे डॉक्टर्स हैं, अच्छे हॉस्पिटल्स हैं, तो हम अच्छे से केयर कर सकते हैं और कर रहे हैं, और डिजीज फ्री कर रहे हैं कैटल्स को, पेट्स को, डोमेस्टिकेटेड एनिमल को, तो उनकी लाइफ बढ़ रही है, लाइफ स्पैन बढ़ रही है. उनकी लाइफ स्पैन बढ़ रही है तो दैट इज अ गुड अचीवमेंट. ठीक है, सो एक तो रीजन क्या रहा एनिमल हस्बेंड्री सेक्टर के ग्रोथ करने का? बेटर वेटनरी प्रैक्टिसेस एंड फैसिलिटीज. दिस इज द फर्स्ट एंड द फोरमोस्ट अचीवमेंट ड्यू टू द गवर्नमेंट. ठीक है, this is providing to be positive step towards the betterment of the cattle, poultry, piggery and related economical farming activity in India, and notable among them are the silkworm rearing, mulberry cultivation. मलबरी यानी शहतूत जिसके ऊपर सिल्कवर्म के कीड़े पाले जाते हैं, ठीक है ना, लैक इंसेक्ट कल्टीवेशन, फिश फार्मिंग एंड द बी कीपिंग. All these activities has increased in the recent past in India. भारत आज वन ऑफ द मेजर सिल्क प्रोड्यूसर है, लैक प्रोड्यूसर है वर्ल्ड का. ठीक है, अभी पढ़ेंगे. Among these, the silk and the lac cultivation have given India a unique name in the world, with the India being the top largest producer of the silk and only country to produce all 5 kind of silk. Okay. Mulberry silk, Muga silk, Tussar silk. There are 5 variety of silk. Further in sericulture I will discuss.
and India is growing, rearing, developing all the silk insects. ठीक है, as well as the only country to produce the lac production for the world export. Okay. In Jharkhand, Ranchi, there is the largest lac research center of the world. So this is the achievement due to the government intervention, due to the government initiatives. Government, when realizing the potential of animal husbandry, they strengthen our rural economy. इन्होंने जब government also realized by studying how the intricately the animals are linked and how they are beneficial for the rural economy, especially in India, then the government is also focusing on the budgets. अब बजटरी एलोकेशन को उसने बढ़ाया गवर्नमेंट ने, और बजटरी एलोकेशंस को बढ़ाया और कई सारी स्कीम्स गवर्नमेंट ने लॉन्च किए. उसमें से मैंने कुछ को कोट किया है यहाँ, जैसे नेशनल लाइव स्टॉक मिशन. यू मस्ट नो 50 वर्ड्स अबाउट द नेशनल लाइव स्टॉक मिशन. द गवर्नमेंट ऑल्सो स्टार्टेड नेशनल डेयरी प्लान. ओके, the government also begins the national program for bovine breeding and dairy development. Okay, what is the another initiative? The national Kamdhenu breeding centers. So these are certain government initiatives which improve this sector in the recent past. क्या बोला मैंने? नेशनल लाइव स्टॉक मिशन, National Dairy Plan, National Program for Bovine Breeding and Dairy Development, and National Kamdhenu Breeding Centers. These are some initiatives. Like that, there are several initiatives. Several. To get improved germplasm, इससे क्या फायदा हुआ? Germplasm मिलेगा. Okay. Semen selection for the breeding. Okay. For the cross breeding. Cattle breeding technologies to create more sturdy, resilient and productive progeny. ज्यादा क्लाइमेट रेजिलियंट, पावरफुल, एजाइल ब्रीड्स हमें मिलेंगे. इसके लिए क्या किया जा रहा है? जर्मप्लाज्म स्टोर किए जा रहे हैं जर्मिनेशन के लिए, ब्रीडिंग के लिए. सीमेन कलेक्शन किया जा रहा है. आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन एक टेक्नोलॉजी है, ठीक है ना. नेचुरल इंसेमिनेशन करते हैं, ठीक है. बुल और ऑक्स का इस्तेमाल करते हैं काऊ के प्रेगनेंसी के लिए. आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन भी करते हैं, सीमेन कलेक्ट करके, इंजेक्ट करके और तैयार करना, ठीक है ना. So that is known as artificial insemination. So we are also using the technology to create a better breed, a selective. Okay. And such breeds are more sturdy, powerful, resilient and productive. So government has did several things. They initiate several schemes and plans, and also they improve the budgetary allocation. They enhance the budgetary allocation. अब बजट एलोकेशन बढ़ा है कि नहीं बढ़ा है कैसे पता चलेगा? अभी बताऊंगा कि बढ़ा कि नहीं. उसके लिए आप इकोनॉमिक सर्वे पढ़ेंगे, data. Now another revolution in the field of fishery is the blue revolution. Blue revolution had changed the fishery scenario in India, enhanced the production in the fishes, not only the inland but also the marine fishes. Okay, so to restructure all the existing scheme in the fishery sector is highly appreciable step to give impetus to the fishery and expected to play a pivotal role in the mass production of seafood in the country. Okay, it also comes under allied sector. Now, if you look at the cattle and the poultry population in India, and this is for your this fact is for your screening examination. Now, when you look at, according to 19th livestock census of 2012, the number of the cattle, buffalo, yak, mithun, these are the bovines of India. ये 4 स्पीसीज मेजर बोवाइन स्पीसीज हैं भारत के.
ठीक है, and apart from that other species, other livestock, and then poultry. This is the status. What was the number of cattle according to 19th livestock census 2012? 190.9 मिलियन कैटल्स भारत में। और यहां देखिए 20th लाइवस्टॉक सेंसस 2019 में हुए, उसमें इसका पॉपुलेशन कितना हो गया? 193.46 मिलियन। ओके, ग्रोथ रेट कितना रहा इस बीच में 12 से 19 में? 1.34% पर एनम ये ग्रोथ रेट रहा, मतलब इस पीरियड का 1.34%. And in the cattle population, India rank 1 today. When you look at buffalo, the buffalo population 108.70 in 2012, ठीक है ना, 19 सेंसस में। 20th में इसका बढ़ गया 1 मिलियन, ऑलमोस्ट 109.85, 1.06 is the rate. Yak 0.08 million is the yak population, ये रिड्यूस हो गया 0.06। देखिए what is the landmark is reduction here, -24.90। यहां देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। In the bovine, the yak population is decreasing. Okay. Now the mithun 0.30. Here there is a slight increase 0.39. 29.52 is the rate. So total bovine in India's population अगर देखेंगे 299.98, जो कि इंक्रीज होकर 303.76 हो गया। कब? 2019 में 20th लाइव स्टॉक सेंसस कहता है। नाउ द शिप विच इज ग्रेट कंट्रीब्यूशन इन द मीट एंड वूल। भेड़ से क्या निकालते हैं? बोला वूल निकालते हैं, द मेजर प्रोडक्ट अपार्ट फ्रॉम मीट। ओके, 65.07 million was the population in 2012-19 census, and it was increased and reached 74.26 millions. Okay, the growth 14.13. Then the goat population in India 135.17, 148.88. In piggery sector there is slight decline. Where there is decline in this sector, always बाकी सभी में rise हो रहे, ठीक है, लेकिन कहाँ डिक्लाइन हुआ? ये दो। The other animals population, because the people are preferring buffalo, cattle, sheep, so the other populations of animal also decline. देख रहे हो आप, जिसकी पॉपुलैरिटी बढ़ती है उसको लोग रियरिंग करते हैं। पोल्ट्री में भी अचीवमेंट है, 729.21 millions poultry population was there. It reached 851.81 millions in the 20th livestock census 2019. Okay, so these are the data which is showing that, इस डेटा से हमें क्या लगा? except the yak, okay, except the pig and the other animals, the population of the cattle, the population of goat, the population of sick buffaloes is increasing in India. Why it is increasing? Not because of the people's tendencies, but of course because of the government intervention. Several schemes, plans has been launched. Okay, and the Operation Flood has contributed a lot in the growth of the cattle population and buffalo population in India.